हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें एक बार पहले आप जो है सिलेबस देख लो। जो जो सिलेबस है, जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार क्विक रिवीजन करना होगा। And then we'll go for the advanced level question, single type question, more than one type question. Then we will be having it will be linked comprehension type question, that is called paragraph kind of question. And then there will be matching also. They're matching us question also in this chapter. So this is all about the thermodynamics question. We will collect almost 10 best question which is asked in the JEE Advanced and from this chapter. तो सबसे पहले आप इसमें syllabus को देखिए, which you have to go for, and quick revision it is thermal equilibrium point. Then you have zeroth law of thermodynamics, heat and internal energy, work done by the gases, calculation of the work done by the indicator diagram. Then you have first law of thermodynamics. Then you have calculation of energy of the gases. Then you have heat supplied to a gas or released by a gas, how heat is getting supplied or released. It is then a specific heat capacity, then molar heat capacity of the gas, then thermodynamic variable, state variable, and the equation of a state over there. Then you have thermodynamic process, all the process here it will be, then polytropic process, and heat engine, refrigerator, heat pump, second law of thermodynamics. Then we have reversible and irreversible process and the Carnot engine. What you can say that sir, which one is important for the JEE advance of you? So important बच्चा एडवांस के लिए कोई भी चीज हो सकता है, क्योंकि एडवांस क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, इट इज ऑलमोस्ट जो है आप उसमें हिडन फॉर्मेट ही में ही रहेगा वो, क्योंकि क्वेश्चन जो है एडवांस ऑर्डर का बनने का मतलब है इट विल बी कंप्लीट। जो सिलेबस हमारा दिया गया है इसमें से कहीं से भी किसी को जोड़ा जा सकता है, दूसरे चैप्टर को भी जोड़ा जा सकता है, कुछ मैथ के एडवांस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग को भी जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत तरह का निकल के आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट थिंक दैट विच वन इज इम्पोर्टेंट, यू शुड नो दैट व्हाट इज द सिलेबस। एंड सिलेबस का जो भी कंटेंट है उन कंटेंट से भागो नहीं, उसको एक बार कंप्लीट करो, अच्छे लेवल पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, and then you can crack JEE Advanced. So this is the first question. We have only one option correct type question, and it is given to you that we have 5.6 liter of helium gas at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter, and taking the initial temperature to be it is T1, then the work done by the process will be what? So this is the question. It is given to 5.6 liter of helium gas at STP in adiabatic compression. So accordingly we can go for what it will be, how to find that this work done. Taking initial temperature, it is given to you in taking initial temperature to be T1 over there. So how we can get the idea about what will be the work done over there? So let's see it is how क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5.6 लीटर दिया हुआ है, किसका? हीलियम का। हीलियम जो है ये गैस आपको दिया गया है, द वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इट इज एंड एसटीपी एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू दिस वन। सो ये वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम जो है यहाँ तक एडियाबेटिकली इसको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग एडियाबेटिक रिलेशन हम जान रहे हैं, और इनिशियल टेम्परेचर ये दे दिया गया है T1। ठीक है, तो वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन जो एडियाबेटिक में होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, देयर इज there was some technical error. Okay, next we are having in this one how to relate that work done। वर्क डन कैसे हम लोग निकालेंगे, इसमें एडियाबेटिकली जो कंप्रेस किया जाता है, तो जब भी एडियाबेटिक हो तो वो रिलेशन हमें पता है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक क्या होता है। दिस इज वी आर हैविंग एन आर डेल्टा टी divided by gamma minus 1. This we use when we have change in temperature, gamma number of mole is known to us। तो चेंज इन टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर इट इज गिवन टू यू T1। Can we have the another temperature T2? Yes, we can find out the temperature, but on the basis of which information? It is adiabatically compressed. So we know that adiabatically, whenever it will be adiabatically expansion or compression, we have the relation of PV to the power gamma. It will be constant.
And on the basis of this, we can relate here that how we can remove this gamma. It is monoatomic gas, so for gamma it is Cp by Cv, and we know for monoatomic helium is monoatomic, so it will be 5 by 3, that it will we can write here. And we are looking to have the relation between the volume and the temperature, but here it is pressure is there, so we have to remove the pressure. From which equation we can remove? It is Pv is equal to nRT. So from here you can see what is pressure. Pressure we can write P, this is nRT by V. So N and R are constant term here. So temperature and volume you can replace with this one, this term it is. So pressure can be replaced with nRT by V. And here you can see this is V to the power of gamma, and it is constant. It is constant. So from here we can relate that what will be the temperature and the volume relation. So you can see here this temperature is having 1, and then volume is to be having, it is gamma minus of 1. This will be constant. And once we are having this relation, we can relate what is T1 V1 gamma minus 1. It will be T2 V2 gamma minus 1. We know हमें ये पता है यहाँ पे कि V1 और V2 क्या है, गामा क्या है और T1 क्या है. तो we can find out it is T2. T2 can be, it will be, T2 can be, it is V1 divided by V2 to the power gamma minus 1, and then you can multiply T1 here. तो यहाँ पे जो relation हमें V1 का दिया गया है वो V1 is the first volume which is 5.6 liter, and V2 is the second volume which is 0.7 liter. And then here gamma value for the helium it is 5 by 3 minus of 1, and then you can relate here T1. T1 is the initial temperature. तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो है आपको, this is what we are having, it is 8, this value it is 8. So ऊपर में इसको simplify करेंगे तो this is 5 minus 3 and then it is 2 by 3. तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2q, and then we go for it is 5 minus 3, it is 2 by 3. So this 3 and this 3 get cancel out. So the temperature what we are having, the final temperature when the volume is getting compressed to it is 7.7 liter, with the initial volume it is 5.6 liter adiabatically helium gas. In that condition, what will be the temperature at the time when we have the volume of 0.7 liter? By that time temperature will be 4 times of the initial temperature. So after getting this information, you must be having that how we can relate the number of mole, क्योंकि यहाँ पे number of mole आपको दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो we can relate that also at STP. आप जान रहे हैं क्या कि 22.4 लीटर अगर आपके पास कोई भी गैस का होगा तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, दिस वी नो. तो यहाँ पे जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है 5.6 लीटर. तो ये लीटर जो है आपको ये इसके इक्विवेलेंट में अगर हम मोल निकालना चाहे तो इट विल बी 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 एंड इट विल बी, इट इज 1/4. तो 1/4 जो है यहाँ पे मोल निकल के आ गया जो इनिशियली है, और इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं वर्क डन ड्यू टू adiabatic process, adiabatic compression here it is happening. So this is nr delta t divided by gamma minus of 1, this one. तो इस रिलेशन के बेसिस पे हमारे पास n का वैल्यू 1/4 है, r वैल्यू इज दिस ओनली. The delta t means it is T2 minus of T1, that is the meaning of delta t. और जो इसमें नीचे गामा है this is 5/3 minus of 1. तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है. T2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? T2 का वैल्यू जो है दिया नहीं है, हम लोग निकाल चुके हैं, दिस इज 4T1. तो T2 का वैल्यू जैसे ही आप रखोगे इट विल बी, वी आर हैविंग द रिजल्ट 4 जो है नीचे आ जाएगा, एंड दिस इज 5 minus 3, 5 minus 3 will be 2 and 3 will go up, so it is 3/4 times of r. And जो temperature difference आएगा that will be, it is what we have the T2 4T1 minus of, so it is 4T1 minus of T1, so it will be 3T1. So 3 into 3 we have 9 divided by it is we have there it is 5 minus 3, it will be 2 also, there is 2 also, so that 2 will be 8. So here 9 divided by 8 r T1. So this is the
फाइनल रिजल्ट what we are getting here 9/8 RT1 दिस। इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो नीचे में 5 minus 3 2 आएगा, दैट 2 आई लेफ्ट देयर बाय दैट टाइम, सो इट इज। और 4 ऊपर से नीचे आएगा तो 4 into 2 8 एंड देन 3 into 3 इट इज 9 RT1। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट जो हमें पूछा गया था यहाँ पे। और दिस इज सिंगल टाइप ऑफ ऑप्शन हियर इट इज। तो यहाँ पे देखिए 9 RT 9/8 RT1 9/8 RT1 वी आर हैविंग द ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए था। इस क्वेश्चन में जो अगर बोला जाए जो क्या खासियत था, तो इस क्वेश्चन में हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि वर्क डन ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एनआरटी डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, जब हम टेम्परेचर डिफरेंस और गामा और एन से वाकिफ है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कि जब वॉल्यूम को जो है 5.6 लीटर से कंप्रेस करके 0.7 लीटर तक लाया जाएगा तो उस टाइम पे जो इनिशियल टेम्परेचर है, अब जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट था इसमें मोल निकालना, क्योंकि मोल दिया हुआ नहीं था। एंड देन वी कैन फाइंड आउट। I think it is easy for you to understand what is the work done in case of adiabatic process. So I hope this is okay. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।